today we are going to learn the static and dynamic characteristics of a measuring instrument. In the measurement system, the performance criteria of an instrument are mainly divided into two categories, and they are static characteristics and dynamic characteristics. So first we see what is static characteristics. The set of criteria defined for the instrument which are used to measure the quantities which are slowly varying with the time. So instrument की the quantities जो है वो slowly टाइम के साथ वेरी करती है या कांस्टेंट होती है, दैट कंसिडर एज अ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे एक्यूरेसी है, सेंसिटिविटी, reproducibility, drift, static error, dead zone, precision, threshold, and linearity. We will learn one by one. Next we have dynamic characteristics. The set of criteria defined for the instrument which are changes rapidly with the time. So instrument के जो भी criteria है which are changes rapidly with the time, so समय के साथ rapidly change होते हैं, that can consider as a dynamic characteristics. So the example of dynamic characteristics are speed of response, fidelity, lag, and dynamic error. First we'll learn the static characteristics. So accuracy and precision are the static characteristics. So what is accuracy? So accuracy can be defined as the degree of exactness, and precision is the closeness of the measurement to each other. हम थोड़ा इसको आगे देखते हैं डिटेल में. So this is our bullseye. It's a very familiar picture. So if we want to aim this target, अगर हमें aim करना है और हमारे सारे जो readings है उसके आजू बाजू आते हैं, मतलब true value के नज़दीक आते हैं, close आते हैं, तो we can consider as a high accuracy. और हमारे हर एक reading जो भी है, so as per the definition of precision is the closeness of the measurement. So सारे हमारे measurement भी एक दूसरे के नज़दीक है. So this picture number 1 is considered as a high accuracy and high precision. If we take the example of this second bullseye, so उसमें हमारी जो ट्रू वैल्यू है, हमारा जो एम है, सो हमारे सारे मेजरमेंट जो है वो एम से काफ़ी दूर है. सो इसमें लो एक्यूरेसी है, मगर रीडिंग्स जो है वो एक दूसरे के नज़दीक है, तो इट कंसिडर एज ए लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन. थर्ड है जो हमारा जो ट्रू वैल्यू है उसके आजू बाजू सारे हमारे रीडिंग्स हैं, सो इट कंसिडर एज अ लेस एक्यूरेट. और जो हर एक रीडिंग्स जो है, हर एक मेजरमेंट जो है वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे है, सो इट कंसिडर एज अ लो प्रिसीजन. एंड दिस फोर्थ एग्जाम्पल, उसमें ट्रू वैल्यू है, हमारा एम है, तो सारे मेजरमेंट उससे काफ़ी दूर है, सो इट कंसिडर एज ए लेस एक्यूरेसी एंड लेस प्रिसीजन. बिकॉज प्रिसीजन भी बहुत कम है क्योंकि हर एक जो मेजरमेंट है उसकी वैल्यू एक दूसरे से काफ़ी दूर है, सो इट कंसिडर एज ए लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन. सो वी कैन से दैट एक्यूरेसी इज कंसिडर एज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस एंड द प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू ईच अदर. नेक्स्ट वी हैव विच इज अ लीनियरिटी. जैसे लीनियर सिस्टम है, लीनियर सिस्टम विच फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. So in this graph we can see that we have an input and output. So this is the linear characteristics. Sometimes consider as a y is equal to mx. और ये जो system है वो non-linear system है. So linearity is defined as the ability to reproduce the input characteristics symmetrically and linearly. So this consider as a linear system, and this is our non-linear system. Linear system will also follow the principle of superposition and homogeneous law. Next is the dead zone. So dead zone can be considered as it is the largest change of the input quantity for which there is no output. अगर हम input और output का ग्राफ देख रहे हैं, so यहाँ हम input दे रहे हैं, हमको कोई output नहीं मिल रहा है, यहाँ तक. So this area we are giving the input and we are not getting any output. So this area can be considered as a dead zone. तो सिस्टम में डेड जोन बहुत ही कम होना चाहिए. सो फाइनली वी कैन से दैट डेड जोन इज द लार्जेस्ट चेंज ऑफ द इनपुट क्वांटिटी फॉर देयर इज नो आउटपुट. सो ये अगर हम पूरा रीजन देखें तो हम इनपुट देते हैं, सो वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट. सो दिस कंसिडर एज अ डेड जोन. नेक्स्ट वी हैव विच इज अ स्टैटिक एरर. सो स्टैटिक एरर इज द डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वेरिएबल. ड्रिफ्ट कैन बी कंसिडर एज ए अनडिजायरेबल चेंज इन द आउटपुट. सो हमारे आउटपुट में जो रैंडम और अनडिजायरेबल चेंज होता है, दैट कैन कंसिडर एज अ ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट में देयर आर सो मेनी टाइप्स. स्पानल ड्रिफ्ट रहती है, जोन ड्रिफ्ट है, वो हम डिटेल में फिर से देखेंगे. नेक्स्ट वी हैव विच इज अ थ्रेशोल्ड, सेंसिटिविटी एंड बायस. लेट्स टेक व्हाट इज मीन बाय थ्रेशोल्ड. सो थ्रेशोल्ड, इफ द इंस्ट्रूमेंट input is increased very gradually from 0, there will be some minimum value below which no output
change can be detected, and that minimum value defines the threshold of the instrument. So we can say that कि हम input देते from 0, there will be some minimum value below which no output change can be detected. So वो जो minimum value है, that consider as a threshold to the instrument. Next we have a sensitivity. Sensitivity is the ratio of change in output to the change in input. अगर कंट्रोल सिस्टम की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी. एक सेंसिटिविटी होती है कि भाई चेंज इन आउटपुट, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन डिस्टर्बेंस, और चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट. सो नेक्स्ट इज बायस. Bias can be considered as a true value. It is the difference between the true value and average of the observed value. अगर हम कोई माइक्रोमीटर स्क्रू से या वर्नियर कैलिपर से कुछ चीज मेजर करते हैं, अगर उसका डायमेंशन है, एग्जैक्ट डायमेंशन है 1 मीटर, सो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगा कि हम जितने भी मेजरमेंट लेते हैं उसका एवरेज क्या है, कि हमने 1 एक्चुअली हमारा जो है वो 1 मीटर मेजर करना है या कुछ उससे भी कम मेजर करना है. सो उसके जो भी रीडिंग हो गए उसके आजू बाजू में 0.8 है, 0.2 है, 0.4 है, 0.9 है. सो उसका जो भी एवरेज वैल्यू होगा इट्स कंसिडर एज एवरेज ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू. नेक्स्ट वी हैव अ रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी. Reproducibility is the closeness with which the same value of the input quantity is measured at different type and under different condition of usage of the instrument and by the different instrument. So reproducibility को हम कह सकते हैं कि same value of the input quantity हम measure करते हैं different time पे, different operating condition पे and by the different instrument. So क्या result आता है? So reproducibility system की अच्छी होनी चाहिए. Next we have which is a repeatability. Repeatability is describe the closeness of the output reading when the same input is applied repeatedly over a short period of time with the same measurement condition, same instrument and same observer and same location and same condition of the use maintained throughout. It is affected by the internal noise and drift. So repeatability can be considered as the closeness of the output reading when the same input is applied. Same input देते हैं, so output के क्या क्या reading आता है, that consider as a repeatability. Next we have which is a tolerance. Maximum allowable error in the measurement is specified in terms of tolerance. So हमारी measurement system में हम maximum कितनी error को allow कर सकते हैं. अगर हमारा कोई measurement है, critical measurement है, so tolerance उसको ऐसे define करते हैं कि maximum कितनी error allowable है. Next we have which is a range or span. Minimum and maximum value of the quantity for which an instrument is designed to measure is called a range or span. Range generally span range जो होती है वो minimum और maximum होती है. Span generally हम कोई भी जैसे electrical signal है तो 3 to 15 psi का span देते हैं. Electrical signal है so 4 to 20 milliampere का span रहता है. Pneumatic system है तो 3 to 15 psi का span रहता है. So that is considered as a range and span. Next we have which is a dynamic characteristics. So the set of criteria defined for the instrument which are changes rapidly with the time, it's considered as a dynamic characteristics. So in the dynamic characteristics we have a dynamic error. Dynamic error is the difference between true value and the measure value. It is the difference between the true value of the quantity changing with the time and the value indicated by the measurement, which means measure value, if no static error is assumed. अगर dynamic error हम consider कर रहे हैं, so we are not assuming the static error. Next we have the speed of response. Speed of response is defined as the rapidly with which measurement system respond to change in the measured quantity. So speed of response system का अच्छा होना चाहिए. Fidelity is defined as the degree to which a measurement system indicate the changes in measured quantity without any dynamic error. So हमारी जो सिस्टम है, हमारा मेजरमेंट है, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है विदाउट अ डायनेमिक एरर. सो सिस्टम की फिडेलिटी ज़्यादा होनी चाहिए. लास्टली लेग. So the delay in the response of the instrument to a change in the measured quantity is sometimes referred as a measuring lag. So हम किसी भी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं मगर देर विल बी सम लेग. अगर हम प्रोसेस कंट्रोल की बात करें सो देर आर सो मेनी लेग्स आर अवेलेबल. प्रोसेस लेग होता है, कंट्रोल लेग होता है. सो सिस्टम में जो लेग है वो बहुत ही कम होना चाहिए. सो दीज आर ऑल अबाउट द स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स of the instrument. Quickly revise the static characteristics उसे कहेंगे they are slowly varying with the time or mostly constant, and the dynamic characteristics of instrument उसे कहेंगे which are changes rapidly with the time. We have seen the examples